Amit कौन है? Amit है क्या? Or the other Amit, Amit? not You have two not Amits. they're not Amit, it's Amit. Amit, okay. Yeah. Okay. So you can put yourself on mute. I'm hearing a background noise. Is it Bharat? Okay, thank you. So today we are going to talk about module 5 of business strategy and HRD. Okay, and here we are talking about organizational development. So I always begin my session with a question: what do you understand by organizational development? If you have to define it in uh, in short, how would you define it? What according to you is organizational development? It's a good question. According to me, what I have learned from Mm. the notes only, Mhm. organizational development is a kind of the strategies that are required Mm. uh, to solve any kind of organization's problem Mm. and to uh, prepare it for the future course of actions. Yeah, interesting. Anybody else? Bharat, you can put yourself on mute. Anybody else? Jigar? Mainly it is organization strategies related. Go ahead, Jigar. Organizational strategy, if we try to just understand in simple terminology, is to for the day-to-day working of the organization and the growth of the organization, what are the strategies that are required? So it can be functional strategies, it can be HR strategies, it can be finance strategies, it can be multiple other strategies that are part of the day-to-day for the organization to work and to grow. Absolutely. Absolutely. Great. So thank you very much. Anybody else would like to say anything? Or somebody else? Is it aligning the strategies with the vision and mission of a company, the organizational strategy? Can say yes. Not only aligning your vision and aligning yourself, but also executing it. Can I say something? Yeah, Devpriya. So for me, operational, financial, and cultural growth of a company. Okay. All right. That's interesting. Thank you, Jigar. Thank you, Sandeep, Devpriya, and Bharat. So I'll define that in a very short, because in the notes it's pretty vague. Can I add something? Yeah. Yeah, Prachi. Hello? Yeah, Prachi, go ahead. It is basically a planned process which Mhm. will aim to improvise or effectiveness of an organization. It will Okay. also have employee satisfaction. It will also lead to productivity increase or effectiveness or overall development of the productivity. Correct. And Correct. also the common intervention of OD will also help into a leadership development, Okay. which Correct. we did in our project, the assignment which was given to us. Correct. So, very well said. Organizational development is basically strategized effort which improves an organization's effectiveness, we can say, and its well-being through various interventions in, say, processes, systems, just like Devpriya said, financial, and a lot of areas. So processes, systems, and structures. And also it involves a holistic approach to enhance the organization's capacity to adapt to its environment. Now, we know that we live in VUCA environment. It's volatile, uncertain, complex, and ambiguous, right? So to adapt to such environment and foster innovation and cope up with the challenges of ever evolving world, organizational development focuses on both the individual and collective aspect of it. So its aim is basically to align the people and the processes and the strategy for a sustainable success through the period of time, not a short term but a long term. ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक कंपनी है और वो उसके लोगों का मोराल डाउन हो रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है,
और प्रोडक्टिविटी गिर रही है, तो एक ऑडी इंटरवेंशन की जरूरत होगी, जिसमें जरूरत होगी प्रॉपर डायग्नोसिस की, जहां पे आप हो सकता है सर्वे करें, हर ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती है, पल्स चेक्स करती है, सो कंडक्टिंग सर्वे टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस, then you after diagnosis you will need to intervene through training programs, implement team building workshops, leadership development programs, and redesigning your work processes for better collaboration. और कई बार फिर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल पार्टीज को इनवाइट करती है, ये बोल के कि आप जरा यहाँ हमारा प्रोसेस चेक करो, कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है ना। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सेंचर एंड डेलॉइट एंड ऑल, दे प्रोवाइड कंसल्टिंग. सो दिस इज द वे it is done. And third, you also need to evaluate your processes and systems. So it's very important that we need to assess the impact of the intervention we did, either through feedback or measuring the KPIs, and you need to continuously follow up on assessments. Am I making sense, guys? Yes. Yes, Absolutely. Right. So in a VUCA world, which this notes talks about, it doesn't talk in detail about it, but I want to share this. So in a VUCA world where change is constant and very unpredictable, the role of OD becomes very crucial. And how? सबसे पहला, you might want to take a note. एक तो आप देखो agility and adaptability. अगर देखें, every organizational development will need to focus on building organizational agility. What is agility, by the way? When we say agility, आप क्या समझते हो agility का मतलब? Speed, Flexibility. Flexibility and speed. Yeah. And why is it important? Resilience. Agility means how agile you are, how fast you are able to cope up with the current changes. Absolutely. And this And it is important. Yeah. It is important in current times because today's world is quite volatile. Things keep on changing a month after month, quarter after quarter. So you Absolutely. have to plan your strategies that kind. Absolutely. So this involves creating a culture that embraces the change. आपका ऑर्गेनाइजेशन में एट द टॉप, जो टॉप लीडरशिप है, वो कह सकते हैं कि हमें ये बदलना है, वो बदलना है, प्रोसेसेस चेंज करने हैं, हमें नई चीज लेके आनी, बट द पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नीड टू अडैप्ट टू दैट चेंज, विद द सेम स्पीड जिस स्पीड से बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. सो दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कल्चर दैट एम्ब्रेसेस द चेंज एंड इट एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्विकली एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट्स. ठीक, तो एक तो एजिलिटी हो गया. दूसरा, टेक्निकल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है. Why? Because we know that technology is evolving. OD plays a very crucial role here in helping organization integrate a new technology effectively. तो उसमें क्या करते हैं आप? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, you go through a digital transformation, AI and automation, while ensuring that human element is not overlooked. I remember back in 2018 when I was working with Mahindra, while most of the organization did not focus on digitization, except Nexa was the first automobile company to introduce iPads for their sales consultants. And all the inquiries and test drives used to happen on that तो जो form fill up होता था वो उस iPad पे होता था. Very interesting. Mahindra took it to the next level. They introduced VR devices. Bring the showroom home, उनका एक concept था, जहां पे if a sales consultant goes out in the market and he wants to demonstrate the car, he used to carry a Samsung Galaxy S9 phone along with a VR device. वो उसके अंदर एक ऐप डेवलप किया गया था जो 3-dimensional image create करता था गाड़ी की. And if you're a customer, so while sitting at home you can see the entire car, from inside, outside, you can see it in different environments. That was an amazing concept by Mahindra. Also, Mahindra tried to introduce 3D showrooms. They invested heavily on that.
because they knew that, in future, this will be a cult. So that's an example of technical integration. Leadership development, एक और है कि given the complexities of UCA world, leadership development will be a central focus. And I'm sure in your organizations too, a lot of your organization, you must be doing it, right? I know for sure Devpriya is working on a certain plan, right, Devpriya, on leadership development in your organization. Would you like to share something related to that? So this was the program dedicated to leadership development only. So that was one of the employee engagement program as well as OD intervention to see how people are motivated and also to promote the succession planning. So that was one concept. And what is the concept of succession planning in your organization, थोड़ा सा उसके ऊपर? So basically it is like जैसे कि हमारे बहुत सारे departments हैं. Like I am also one of the examples of it. I was into operations earlier. So one of the L&D person left the organization, and I used to coordinate all the employee engagement programs, initiatives, used to coordinate for these online sessions in the COVID time. So my management wanted कि अगर ऐसे कुछ potential लोग हैं हमारे organization में, and if we give them a holistic overview of the hospital industry, so they can come out of their monotonous zones and do something like much more जो भी वो कर रहे हैं. So मुझे दो options मिले, like I can choose L&D in HR, and other was additional front office as well as operations. So L&D I chose. So that was like one of the opportunities I got out of these leadership development programs only. So that is one of the succession planning that जो मुझसे senior बंदी थी, she was taking like charging 1.5 lakhs a month, or I was a beginner, so I got a mentor, and I am also like stepping into this field. So yes, why not? Great. So yeah, that was the leadership development. Thank you, Devpriya. Also, we'll talk about one more aspect. So there's one more aspect to it. Nowadays, आप काफी सुनेंगे इसके बारे में, diversity and inclusion. सुनते हैं इसके बारे में? Yes, Kaushal, not maybe in length, but yes, I have heard it in one of two training programs. Anybody would like to share what is diversity and inclusion? आपके organization में follow होता होगा? So what I understand, Kaushal, Sarika, this side is, so they nowadays, all the organizations, they, are trying to bring the culture intra-division, collaboration, right? And cross-divisional collaboration to have a better efficiency in the organization. And that's what they believe in, having a diverse culture in the organization. But if you say that in my organization, I think it is yet to be done, but it is one of the aspects of organizational development. Okay. Yeah, well said, Sarika. Anybody else would like to add something on that? And then I'll share a couple of examples related to diversity and inclusion. Kaushal, what I feel that in diversity organizations, their main aim is to bring different perspectives. Okay, so they always like to get employees from different background. It can be cultural background, geographical background, different means gender they include. So likewise, Absolutely. it is way to do a inclusive culture so that different perspectives we can get. Absolutely, Sandeep. I'll give you one example. Have you heard of this hotel chain called Lemon Tree? Yes. They have come. I guess they were the first in the industry, if I know, in hotel industries, to come up with a concept wherein they
hired specially abled people for their regular roles, like waiters role, or support staff. Have you seen that? That is a very good example of diversity and inclusion. Along with that, including people from various genders, respecting their values, respecting them is also one of the key aspects of diversity and inclusion. Like treating everybody with equality. That is a part of diversity and inclusion. Jahan pe OD will continue to address diversity and inclusion, recognizing benefits of diverse perspectives in navigating complexity and ambiguity. तो ये कुछ एग्जांपल्स है. आजकल इसका काफी ट्रेंड है, एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल बात करती हैं, इसके बारे में चर्चा होती है. सो या दैट इज इट. इसके अलावा we all must have experienced it, that now most of the organizations are working in hybrid culture, right? Hybrid culture, jahan pe people are working remotely. With the rise of remote work, organizational development will need to develop strategies to foster a sense of belongingness. आप दूर दूर काम कर रहे हैं, आप अपने घर से काम कर रहे हैं, टीम्स आपस में मिल नहीं रही है, बातचीत नहीं कर रही है, क्या हो सकता है? सिंस you are not physically interacting with people, एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिसिंग होती है. सो ओडी का ये कनेक्ट नहीं बन पाता है. एग्जैक्टली, दैट्स द वर्ड. तो ओडी का ये स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे लोगों को कनेक्टेड रखा जाए. एंड आई रिमेंबर my stint with ByteDance, I worked for the entire year, remotely. I had never seen my office physically. Yet, I don't know, somehow people were so connected with each other. They used to respect each other so well because the organization had that culture. And every weekend, they used to conduct get-togethers, parties, weekend parties virtually. They used to conduct programs virtually. I remember celebrating 15th August Independence Day program virtually on Zoom. I had never done in my life. It was a new thing for me, and we enjoyed thoroughly. People were performing on Zoom, and they were like enjoying like anything. So remote work and managing the remote work and virtual team becomes very imperative as a part of OD, right? Make sense? So how would you collaborate? अकाउंटेबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे लोगों के अंदर? एक बंदा जो घर पे बैठ के काम कर रहा है, ऑफिस में नहीं, आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, तो वो एक्चुअली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिव है या नहीं है, कैसे करेंगे आप? अकाउंटेबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, राइट? मेकिंग सेंस? सिद्धार्थ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार? ओके. एक और चीज है कि organizational development also ensures that people in the organization are learning continuously. Learning रुकनी नहीं चाहिए. तो continuous learning is also a part of OD. ठीक? Lifelong learning कैसे हो organization में, उसके लिए आपने क्या systems और processes लगाए हैं, ये OD का part है. ठीक है? And why is it important? To keep the employees skilled and relevant and up to date in the industry. तो ये है basically OD. तो मोटा मोटा ये कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो फ्यूचर है इस तरह के एनवायरनमेंट में, it involves embracing change, leveraging the technology, developing good leadership, fostering inclusivity and promoting a culture of continuous learning. ठीक है? तो that is it. अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं. There are various elements of OD. Page number 90, which says aligning culture and values, data. Aligning culture and values, data analytics, focus on ongoing change, design around the human experience. Kaushal, Kaushal, one thing I learned from that leadership program, OD was one of the topics on that course. So OD basically does not
follow the process of revolution. It is always with the evolution. So Very well said. this is, Nice. yeah. It's not about revolution, it's about evolution. Very nice. Correct. So, so we'll understand these elements now, these 5 elements which is there in the book, page number 90. First point is aligning culture and values. So एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एक कंपनी है जो इनोवेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, कोलैबोरेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है, तो उसके लिए एक कैसा आप ओडी इंटरवेंशन करेंगे ताकि आपका कल्चर और वैल्यूज जो है अलाइन हो जाए. सो प्रोबेबली आप वर्कशॉप और ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे जहां पे आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे इनोवेशन क्यों जरूरी है, कोलैबोरेशन क्यों जरूरी है, लोगों को बिठा के समझाने की कोशिश करेंगे, राइट, और रीइंफोर्स करने की कोशिश करेंगे. प्रोबेबली आप रिकग्निशन प्रोग्राम चलाएंगे जहां पे आप एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करेंगे जो इनोवेटिव हैं, राइट. आप में से किसी भी के कंपनी में इस तरह का प्रोग्राम है जहां पे जब बंदा कुछ नया करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई नई चीज अचीव करता है तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है? Because in our Yes, organization, Kaushal, yeah. we have because in Bear what we do, we recognize uh, means the tertiary level persons on a quarterly basis, and it is called Bay Spot, Bay Champ. So these kind of programs are there, right? So means people are identified who are doing innovative things, and on the basis of that, a panel decides whom we should give the recognition. Exactly. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके लोग इनोवेटिव हों तो ऑब्वियसली बात है उसको रिवॉर्ड करना पड़ेगा, उसको प्रमोट करना पड़ेगा. लाइक इन आवर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी डू इज वी कंडक्ट पीरियोडिक इवेंट्स काइंड ऑफ like Shark Tank, people come up with new ideas, people come up with new apps. तो अभी रिसेंटली हमारी कंपनी में एक कॉन्टेस्ट हुआ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सिद्धार्थ, आई एम जस्ट चेकिंग आवर डेट शीट. एग्जाम्स का जो टाइम है 10 AM to 1 PM. टाइमिंग आ गया क्या? यस यस यस, उस 10 पे AM लिखी है 10 ना AM एग्जाम डेट रहेगा. के ऊपर. वो तो शेड्यूल में लिखा हुआ है. But all the क्या days है? are on, all the exams are on Saturday, right? Not on a weekday. संडे एंड संडे सैटरडे भी है. है शायद. संडे एंड भी है. सैटरडे, संडे भी सैटरडे है. एंड संडे. या Oh, wonderful. तो Very द nice. सैटरडे 3 इज घंटे का वर्किंग एग्जाम डे. रहेगा. पता नहीं मैं कैसे करूंगी. मेरा मेरे लिए तो ट्राई 28 करनी पड़ेगी. it's a recording is going on. I don't want to talk on a personal note. ठीक है, carry on. Yes. Can we? Yeah. So we were talking about this. So rewarding new ideas. So we run contests like that and quarterly उनको reward किया जाता है. So एक workshop कर सकते हैं, recognition कर सकते हैं, leadership modeling कर सकते हैं. Ensuring that leadership behaviors align with the desired values. Serving as role models for the rest of the organization. So this is about aligning values and cultures. I don't think any other way we could align our culture and values. There could be certain more ways also, but this is it. ठीक है. तो अलाइनमेंट होने से होगा क्या? It will foster a culture where employees understand, embrace and live the organizational values, and this will create a more cohesive and purpose driven workplace, I would say. ठीक है. दूसरा एलिमेंट क्या है? डेटा एनालिटिक्स. नाउ इमेजिन अ कंपनी जहां पे they want to enhance their decision making through data analytics. आजकल ये भी एक है कि मेजरली जो डिसीजन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स. दिस विल एंड इन 10 minutes it says anyways. So कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या इनिशिएटिव ले सकती है? ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर सकती है जहां पे डेटा एनालिटिक्स टूल्स के ऊपर और टेक्निक्स के ऊपर ट्रेनिंग होता है. आजकल कंपनीज
पावर BI और बहुत सारे टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, जस्ट टू इम्प्रूव ऑन डेटा एनालिटिक्स। फिर आपका डेटा ड्रिवन कल्चर, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आप डेटा ड्रिवन कल्चर एक बनाते हैं, जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स को आप एनकरेज करते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो डेटा ड्रिवन हो, वो गट फीलिंग के थ्रू से लिया गया डिसीजन ना हो, इट हैज टू बी सपोर्टेड विद द डेटा। एंड थर्ड इज मेट्रिसेस एंड KPIs। तो KPI डिफाइंड होना जरूरी है और उसको मेजर होना जरूरी है with respect to OD, so that organizational performance can be evaluated, and that's how data analytics works. Okay, so what data analytics orientation does is it enables the organization to make more informed decisions, optimize the processes, and stay competitive in the market. ठीक, तो ये एक point हो गया. Anybody would like to add anything or any questions? We'll move to third point, that is focus on ongoing change. Is basically we need to understand the organization behavior before analyzing the diagnosis for the development. आपको बिहेवियर तो खैर Organization ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर तो डेफिनेटली आपको मॉनिटर करना ही है, बट इंश्योर करना है कि ये जो 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है. Third is focus on ongoing change. Now example is before we start the third, can we switch off and switch on, because we have 7 minutes left. I think one point can be discussed here, and then so focus on so customer imagine करिए कोई ऐसी कंपनी जो frequently changes देख रही है मार्केट डिमांड्स में, तो OD अप्रोच क्या होगा. तो यहाँ पे मेरे को एक एग्जांपल ध्यान में आता है कि आजकल जो एनवायरनमेंट है जिसमें फिनटेक कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के लोन प्रोडक्ट्स की डिमांड है. जैसे किसी को वर्किंग कैपिटल लोन्स की जरूरत है, किसी को शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है, किसी को कंज्यूमर ड्यूरेबल की, मतलब फिनटेक इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन है आज के डेट में. एंड अदर इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन में फिनटेक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा है. सो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वो है, वोलेटाइल है, नहीं वोलेटाइल नहीं कहेंगे, एवर इवॉल्विंग है, तो आपको डेफिनेटली उसके पेस से मैच भी करना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज मैनेजमेंट वर्कशॉप्स लेके आएंगे, सो दैट लोग चेंज को अडेप्ट कर सके इजीली. अदरवाइज सी ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम इजीली मूव नहीं होना चाहते, हमें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं है, तो लोग बहुत इजीली चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कुछ नया करना भी चाहती है, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहती है, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, लोग नहीं करते हैं. तो इसके लिए वर्कशॉप करना बहुत जरूरी है, राइट. अलॉन्ग विद दैट आप अजाइल मेथोडोलॉजीज यूज कर सकते हैं टू एनहांस द एबिलिटी एंड टू अडेप्ट क्विकली. डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, नए सिस्टम्स और प्रोसेसेस बना सकते हैं जो ऐप बेस्ड हो, और बेटर डिजिटाइजेशन लेके आ सकते हैं. ठीक है. सो बाय एम्ब्रेसिंग दिस ऑनगोइंग चेंज द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स मोर रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल शिफ्ट्स. Fourth point, design around the human experience. Suppose a company recognizes the importance of positive human experience at work. अच्छा environment देने से लोगों को, अच्छा माहौल देने से, अच्छा कल्चर देने से लोग परफॉर्म करते हैं, तो OD इंटरवेंशन उससे रिलेटेड क्या हो सकती है? So you provide training for managers to enhance their leadership and interpersonal skills. लोगों का लीडरशिप स्टाइल कई बार ऑटोक्रेटिक होता है, तो उसको थोड़ा सा मेलो डाउन कैसे किया जाए ताकि ह्यूमन फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो, लोगों को प्रेशर ज्यादा फील ना हो. Second is employee well-being. A lot of organizations focus on well-being of the employees. Yoga days करना और तरह तरह के activities involve रखना. For example, in our organization, for a very long time, we did every morning
for 10 minutes at 10 a.m. We used to do stretching exercises. So well-being के लिए एक छोटा सा स्टेप, ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशिएटिव जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं लोगों के लिए ताकि ओपन कम्युनिकेट, ओपन फोरम्स होते हैं, आपके भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट एक बार आते हैं और डिस्कस करते हैं ऑल द चैलेंजेस, ओपन फोरम्स होता है, या लेट इट आउट सेशन होता है मैनेजर्स के साथ, एक अलग से सेशन होता है वन ऑन वन जहां पे आप मैनेजर्स को अपने सारे दिल की भड़ास बैठ के सुना सकते हो और मैनेजर सिर्फ सुनेगा। आई डोंट नो आपके आई ये ना रिमेम्बर। हमारे उसमें एक है जिसका नाम है HTML। इट सेज हम तुम मिले। वाह। सो उसमें तो इट इज लाइक चिट चैट ओवर अ कप ऑफ कॉफी। एंड टाउन हॉल नहीं है, टाउन हॉल में बहुत ही ऐसे भड़ास निकल जाएगी, टाउन हॉल नहीं है, बट या एक कमरे में हम तुम मिले। सो इट्स वेरी नाइस, HTML प्रोग्राम। और सो सारा या सारा अप्रेजल में दिखाएंगे फिर मैनेजर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये वो मैनेजर्स तक के लिए नहीं है, ये मतलब दिस इज फॉर एवरीबॉडी। मिडिल लेवल टू अप कोई भी आ सकता है। बट ये बहुत ही ऐसे ध्यान से करना होता है, बिकॉज इसका ना एक हमें ड्रॉबैक और एक फीडबैक ऐसे मिला कि जो भी बात कर रहा है और अगर उसका प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ है तो देन एवरीवन इज ट्राइंग कि हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमें भी करना है, और फिर वो एक बायसनेस वाला एक थोड़ा नेगेटिव गया था ये। तो ये बीच में अभी हमने होल्ड कर दिया। सो प्रोज एंड कॉन्स दोनों थे इसके। ओके ओके, I ग्रेट। think Garima is also saying बेसिकली something हम related to तुम the मिले same was thing, like, कुछ Friday Friday. गरिमा। नहीं वो फन डे फ्राइडे में तो गेम्स हो गया, बट दिस इज No, no, it फॉर is कि it आप is अपने Frank डिपार्टमेंट Friday. के बारे में बात करते हो, आप अपने आपको कुछ स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करनी है। लाइक जैसे हमारे हॉस्पिटल में देयर आर डॉक्टर्स एंड देयर आर मैनेजमेंट स्टाफ। सो एक डॉकेड नाम से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, डॉकेड, डॉक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए हो गया ना, लेकिन बाकी स्टाफ कैसे अपनी बात करेगा? तो इसलिए फिर हमने एक HTML प्रोग्राम एक स्टार्ट किया था। It गरिमा, was like that. थैंक यू देवप्रिया। या गरिमा। Yes, in my organization, it is Frank Friday. So what we do is one-on-one with manager, we discuss two plus points. I mean, what to say, qualities that we have, and two, uh, I mean, what is the where we are lagging or what we need to improve, two things that. So this is Frank Friday between manager and us. Maybe we follow it with our colleagues also. So one Frank Friday is with manager and four Frank Fridays with our colleagues. So that's the way we figure it out, that what are the good qualities in me or what are the bad things which I need to improve. So Right, these we discuss on Fridays. So right. it is not So about screwing up manager. It is about conversing as to what is good and bad between each other, so that we can absolutely, work. absolutely. Yeah, yeah. It's basically casual discussion between managers and subordinates, So which so the so the otherwise, discomfort, so Exactly, the exactly. discomfort that I have, I would be sharing, and the uh, comfort zone that I see, I would rather be sharing that as well. right. So Basically, no filter talk, kinda, that you can't say it in an open forum. exactly, Correct. not Something all, that I cannot say is open. correct, but not always. It's like more of a casual talk, जो कि otherwise आप नहीं करते हो, because ज्यादातर ऑफिस Otherwise, के नहीं अंदर आप करते। ट्रांजैक्शनल बातें ही करते हैं, right? You don't get to know about the other side of that person, उसका उसका Correct. नेचर, उसका बिहेवियर, उसका उसके अंदर कुछ और भी there's a human side of your manager, उसको आपने एक्सप्लोर। तो जैसे हमारे यहाँ क्या Yeah. होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखो अलग अलग तरीके से इसको करती है। इन माय ऑर्गेनाइजेशन द फाउंडर टेक्स अस फॉर टीम लंच, चलो लंच करने चलते हैं, अभी बुधवार को आने वाला है। तो उस लंच में क्या होता है, हम कैजुअल बातें करेंगे फाउंडर्स, जो हम अदरवाइज नहीं करते हैं कि आप Partial heads up. It's getting off. You're allowed to या create a link. या सो we'll join the same link again, okay? Oh, wonderful. Very Let's nice. just drop off. Yeah. Okay. So yeah, steps in building OD. So if you have plan to build a strong process around organizational development, you need to build a culture where the employee should be motivated and should have the inspiration and proper reasoning to do so. Okay. Why? To bring about a change which everyone should have
wherein everyone should have a common purpose and a goal, and they should all be motivated to do the same thing for same reason, bringing people together. इसके जो 4 स्टेप्स है इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है असेसमेंट. ठीक है. Now suppose a company is experiencing a decline in engagement and productivity. I'll again say it. You conduct the survey, you analyze their performance through matrices, and you do a benchmarking. That's the only way you assess people, right? आप सर्वे करोगे कि क्या चल रहा है, आप इंटरव्यू करेंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे फ्रॉम एम्प्लॉइज, जैसे 360 डिग्री फीडबैक होते हैं और भी कई टूल्स होते हैं, अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस एंड सजेशंस. Review their performance based on KPIs, and you benchmark, compare the organization's performance and practices with the industry benchmarks and best practice. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों के परफॉर्मेंस है वो किस लेवल पे है और इंडस्ट्री किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो आप बेंचमार्किंग करते हैं और ये देखते हैं कि हमें ओडी की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो क्या करने की जरूरत है. So through assessment, the organization gains a clear understanding of its current state and areas that need attention. ठीक है. So यहाँ पे सब पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे हाउ डू दीज लिंक टू बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ये आपको देखना होता है. गोल्स, व्हाट आर द हाईएस्ट लेवरेज एरियाज टू इंप्रूव, कौन कौन से एरियाज है जहां पे आपको मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये आपको असेसमेंट से पता लगता है. एंड टू डू दैट यू हैव वेरियस टूल्स. व्हाट आर सम ऑफ द टूल्स व्हिच यू यूज? उस दिन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे बैलेंस स्कोर कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ, राइट निहारिका? असेसमेंट टूल्स बहुत सारे हैं. Would you like to share some of the assessment tools? Anybody? One of them is pulse surveys to analyze. Yeah. This would be an out of the blue question for me, but ये कल की क्लास में डिस्कस किए थे, no, where Okay. Dr. Raghavi asked this question, what is the difference between assessment and evaluation? So That's an interesting question. I wanted to know more about it, because no, I had a different idea, but she ended up saying something. So, Okay. So what is your understanding? First of all, I would like to know see, then. my idea was wrong, but no, what she ended up saying, to my knowledge, was, I don't know if somebody is here, who can correct me. Assessment वो बोल रहे थे कि which is going to add value to something, is assessment. So I do something which is going to bring value add to a particular process or a system. वो assessment हुआ, that's assessment. Evaluation is, I don't remember what she spoke about evaluation. So mainly evaluation was a kind of a process which I follow, on evaluating a particular system or a process. Correct, मैंने बोला था, I don't know whether it's right or wrong. Siddharth, you are actually correct. सिद्धार्थ, यू आर एक्चुअली करेक्ट. असेसमेंट से हमको डेटा मिलता है और उसको हम यूज करते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू टू मेक अ डिसीजन थ्रू दैट. Exactly. यू आर एक्चुअली करेक्ट इन योर अंडरस्टैंडिंग. So असेसमेंट first से is सिर्फ हमको डेटा मिलता है. Exactly. So first is I assess a particular situation and then I evaluate and then I again assess. तो वैसा चलता है क्या? नहीं, हाँ, it's an ongoing. होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ, उस टेस्ट में आपको 10 में से 9 मिलते हैं. ओके, असेसमेंट हो गया आपका. अब मुझे ये दिखाई देता है कि सिद्धार्थ की इतना मतलब इतना पढ़ता है, वो सब कुछ है. मैं इवैल्यूएट करती हूँ, उसने 1 मार्क कहाँ लूज किया. अब मुझे पता चलता है उसका देख के कि अरे दिस वाज अ वेरी सिली मिस्टेक, सो आई विल गिव यू दैट थिंग. सो प्रोबेबली मुझे लगता है कि तुमको थोड़े से और प्रैक्टिस शीट दूंगी तो हो जाएगा. करेक्ट. सो दैट इज योर इवैल्यूएशन वेयर आई एम मेकिंग अ डिसीजन suited to your individual need, that I will take a decision to map your learning journey or your work journey. That's what evaluation is about. Perfect. Thank you. Correct. Very well said, Niharika. So basically assessment और evaluation दोनों कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं. असेसमेंट नॉर्मली हम लोग शुरुआत में करते हैं एक बेसलाइन बनाने के लिए कि करना क्या है, और इवैल्यूएशन हम करते हैं ज्यादातर उस जो भी हमने डिसाइड किया है कि प्लान ऑफ एक्शन, उसको लास्ट में रिजल्ट आने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने बेसलाइन बनाया था
क्या उससे ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट्स लाइक दैट. सो एक तो very well said by Niharika that assessment is more data or based. Garima wants to say something. Let me finish, Garima, then you can add. So assessment is about getting the information. Evaluation is making a judgment through that evaluation. असेसमेंट शुरुआत में करता है, इवैल्यूएशन जो है वो पीरियोडिकली होता रहता है. और बेसिकली असेसमेंट का जो फोकस है वो होता है कि अभी क्या चल रहा है, where you stand, है ना, वेयर डू यू स्टैंड. that's एंड right. इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है कि भाई आउटकम Same क्या रहा, outcome है. आउटकम क्या निकला, कि आगे क्या करना पड़ेगा, Okay. क्या चेंज. ठीक, ये है. या गरिमा. Yeah, just like yesterday's class, so ma'am showed us one flow chart where evaluation was to and fro process, and execution, then again to evaluation, there is Correct. Two-way arrows, right? So Correct. if we are talking that evaluation is the last stage where we, after executing something, we evaluate. So why again going to execution? So evaluation That is is what I feel. I mean, I am not, if I am. Is it not a cycle where I assess, evaluate, then again I do something and then assess? So it's an ongoing process, right? Yes, it's an ongoing process. Yeah, so just a question after what Kushal said, that it is an end process. Not always. So I'll correct myself. It occurs, after the completion of any project, and it can be conducted periodically also. बीच में भी आप इसको कर सकते हैं इवैल्यूएशन को. तो बीच बीच में ना आपको प्रोग्रेस चेक करने के लिए करना होता है इवैल्यूएशन बेसिकली. ठीक है. ऑनगोइंग इफेक्टिवनेस जो आपने प्लान किया शुरू में थ्रू दी असेसमेंट, जो आपको आउट फाइंडिंग्स मिली, उसके बेसिस पे आपने जो डिसीजन लिया और आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाया, उसको करना शुरू किया, तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए इवैल्यूएशन होता है. तो ज्यादातर इफेक्टिविटी लास्ट में ही चेक करते हैं आप. उसके बाद फिर कुछ चेंज करते हैं, फिर आप चेक करते हो कि अब नए चेंज के बाद फिर क्या बदलाव आया. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. हाँ, लेकिन वो एक्शन लेने के बाद आप करते हो. असेसमेंट आप शुरुआत में कि स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आप असेसमेंट कर लेते हो. सिंपल सी बात. करेक्ट. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, बेसलाइन कहाँ से शुरू करेंगे. ढांचा बनाना है पहले, राइट. करेक्ट. हाँ, मतलब कहीं से तो शुरू करेंगे ना. कुछ तो मेट्रिक डिसाइड करेंगे कि भाई एक बंदे को किस पे इवैल्यूएट करेंगे बाद में जाके. तो वो जो है वो असेसमेंट से शुरू होता है, फिर इवैल्यूएशन तक जाता है. Wonderful. We can go ahead. Assessment and awareness. That's second. ठीक है. तो ये असेसमेंट हो गया. सेकंड इज अवेयरनेस. नाउ आफ्टर द असेसमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इट डिसाइड्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर चेंज. सो आपको ये पता लगा कि इस असेसमेंट से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बदलाव लाने की जरूरत है. अब मैं बदलाव लाऊंगा कैसे? ऐसा तो नहीं कि मैं ओवरनाइट मैंने डिसीजन लिया, आपने एक फरमान जारी कर दिया, कल से ये सब बदल देंगे. ऐसा नहीं हो सकता. लोगों को टाइम चाहिए चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए. तो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. आप एक ग्राउंड बनाना तैयार करने की कोशिश करते हैं कि लोग धीरे 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 उस चेंज को अडॉप्ट कर ले. तो ये अवेयरनेस इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट. इसमें आप क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन कैंपेन्स रन करते हैं कि भाई अब हम ये करने वाले हैं, नया प्रोसेस आने वाला है, नए सिस्टम्स होंगे, हम ये नया ऐप या ये नया टूल लॉन्च कर रहे हैं जिससे हमें ये बेनिफिट होगा. तो आप उसके अराउंड अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. फिर पता लग गया कि हाँ अब ये चेंज होने वाला है, फिर आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं. उसको यूज कैसे करेंगे, नया टूल आ रहा है, नए सिस्टम्स आ रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यूज कैसे. स्टार्टअप्स हाँ कह सकते हैं. बट in our company, which is again a startup, we do this. We bring a new system, we create awareness, and we conduct training around it. लोग अडाप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हो बात की बात है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि स्टार्टअप्स में थोड़ा मुश्किल ही होता है. Then leadership messaging, ensuring that leaders communicate the vision of for a change and the importance of everyone's contribution.
तो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको। चलो फिर पहले सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते, फिर मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा इसका। तो अवेयरनेस हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं? अवेयरनेस आपको पता लग गया, अलाइन करते हैं फिर सबको। एक बार अवेयरनेस हो गई, एस्टैब्लिश्ड हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद द डिजायर्ड चेंजेस। तो उसमें क्या करेंगे आप? वैल्यूज एंड कल्चर्स को रीइंफोर्स करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे द डिजायर्ड वैल्यूज एंड कल्चर्स थ्रू वेरियस चैनल्स। पॉलिसी एंड प्रोसेस को एडजस्ट करेंगे, ट्रैवल पॉलिसीज, लीव पॉलिसीज, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, हर तरह की पॉलिसी आप उसको करेक्ट करेंगे। फिर लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे आप ट्रेनिंग एंड सपोर्ट करेंगे कि नए लोगों को, मतलब लोगों को अगर प्रमोट करके आपने कोई नई पोजीशन दी है तो उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा ना, उसके अंदर उसको स्किल को डालना पड़ेगा। तो ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो अलाइनमेंट से क्या होता है? इट एंश्योर्स दैट एवरीवन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन understands and is committed to the common goals and values of the OD initiative जो आपने लिया है। ठीक, क्योंकि लोग अलाइन नहीं होंगे, आपने बोल दिया ये करना है, लोग करना तो शुरू कर देंगे, लेकिन वो अलाइंड अगर नहीं है तो उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, राइट? तो अलाइन बहुत जरूरी है सो दैट दे कैन फील इट। एंड फोर्थ इज अडेप्टेबिलिटी। नाउ विद alignment in place, the organization, what they do is they focus on building adaptability to sustain the change। कि आपने चेंज तो ले आया, लेकिन वो चेंज कितने समय तक जिंदा रहेगा? हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके यहाँ नई चीज आई, नया सिस्टम आया, प्रोसेस आया, कुछ टाइम लोगों ने फॉलो किया, बाद में धीरे धीरे वो ठंडे बस्ते में चला जाता है? होता नहीं होता है? कई कई ऐसी चीज होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत पुअर होती है। उसकी वजह से क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा सा डिमिनिश होने लगता है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड अजाइल ट्रेनिंग, टेक इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स, कंटिन्यूअस लर्निंग, ये सब की जरूरत इसीलिए पड़ती है। ठीक, सो बिल्डिंग अडेप्टेबिलिटी will ensure that the organization can evolve and respond to future changes। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका ये हो गया। I think Niharika, we should discuss it till here because it's already 10 o'clock and I हाँ, don't want to stretch it। मैं उसको ना ऐसे ही डिवाइड किया है, अगर आप देखो ना इसमें, हम्म, so I have divided it like that।